Hi everyone, welcome to my channel. So now I am going to discuss important topics from health that will be very important for this year prelims 2023. So friend, as you know, we already running a series called Panch Kadam series. What is this Panch Kadam series? Basically, we choose a 5 important topic from each and every part of science and technology that are more relevant for your this upcoming prelims exam. Now, very less day is left for your exam. Means 28th May is your prelims date. Now it's time to do revision. Okay, but you should give this 5 topic in your mind when you will do revision. Maybe they will ask a question in your prelims exam. Okay, so what are the topic we'll try to cover? We'll try to cover a topic like first is rice fortification. Okay, then first ever fungal priority pathogen list, okay, recently released. Then self-amplifying messenger RNA, then antimicrobial resistance and gonorrhea. And we will discuss also some important virus that was in news, उसको भी हम लोग थोड़ा देख लेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास. तो पहला बात करते हैं राइस fortification. So what is the fortification? Fortification is some method, where we add some important nutrients in rice so that it will increase its nutritious value. Okay, for example, vitamins, iron that required to make a food more healthier. So that's called rice fortification. So why it was in news? It was news because the Department of Food and Public Distribution, okay, remember Department of Food and Public Distribution has issued standard operating procedure to maintain desired quality standards for implementation of rice fortification. सो रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने स्टैंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बताया कि किस तरह से एक क्वालिटी मेंटेन किया जाएगा अबाउट द राइस फोर्टिफिकेशन का. और ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का मेन एम यही है टू एड्रेस माल न्यूट्रिशन, एनीमिया एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी इन फूड प्रोडक्ट. जो तो फोर्टिफिकेशन होता है नॉट ओनली इन राइस, दिस इज आल्सो एडिबल ऑयल्स. ओके, देन योर सॉल्ट, राइस एंड अदर सम क्रॉप्स में भी इसको फोर्टिफिकेशन किया जाता है जिससे कि इसका वैल्यू इंक्रीज हो जाए, न्यूट्रिशियस वैल्यू इंक्रीज हो. एंड इंडिया इज वेरी परफॉर्म वेरी बैड इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स. In 2021 India's rank is 101. Okay, out of 116 country, India rank is 101. So India performed very bad in terms of malnutrition and global hunger index. That's why our focus here it is how can we improve the problems. Okay, how we can improve the quality of the food product so that this type of problem we are able to sort out. Now rice fortification, it is a process adding micronutrient to the rice. Main क्या है इसको micronutrients like iron, vitamins ये सारे को add करना है. So when fortified, it shall contain mandatory micronutrients like iron, folic acid and vitamin B12. तो इन आपके prelims point of view से ये important है. Remember कि iron जो add होगा, folic acid जो होगा और क्या क्या इसमें micronutrients में addition होता है. और optional में होते हैं जिंक, विटामिन ए, थायमिन, ओके, राइबोफ्लेविन, नाइसिन एंड pyridoxine as per level given by Food Safety and Standard Regulation 2018. So 14 fortification of foods required some guidelines कि कौन सा न्यूट्रिएंट मैंडेटरी न्यूट्रिएंट्स है. मैंडेटरी मींस आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 तो देना ही देना है. और ऑप्शनल डिपेंड करता है कि किस जगह पर राइस को एक्सपोर्ट किया जा रहा है. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जिंक, विटामिन ए, थायमिन, राइबोफ्लेविन, these are all called optional. And this are means addition is happened because of guideline issued by Food Safety and Standard Regulation 2018. Now according to FSSAI norms, the fortified rice shall contain iron, folic acid and vitamin B12. In addition, so these are the some B2, B3 and vitamin thing also be contained in micronutrients. So India में क्या होता है, इंडिया में बेसिकली क्या टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है. In India, the rice is fortified by extrusion technology. What is this extrusion technology? Means where this is a one machines where you where small grains are cut by a machines by technology, which milled rice is pulverized and mixed with premix containing vitamins and minerals. उसको पूरा क्रश करके पाउडर करके उसको मिक्स किया जाता है प्रीमिक्स कंटेंट विटामिन से. उसके बाद एक लेयर बनता है और फाइनली इस लेयर को इस मशीन में डाला जाता है जहां पर ये मशीन इस लेयर से जाकर स्मॉल पार्ट्स में कट होकर निकलते हैं बाहर. सो दिस इज कॉल्ड अ एक्सट्रूजन टेक्नोलॉजी दैट इज मोर यूज इन इंडिया. तो इंडिया में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होता है इसके लिए आप ये जानो एक्सट्रूजन टेक्नोलॉजी. ओके, विल मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. यहाँ पर जैसे कि फसाई के बारे में पढ़ेंगे, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ये क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यू दिल्ली. तो कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है हेडक्वार्टर से अबाउट इसके बारे में. इट इस्टैब्लिश अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. ओके, तो कभी मिनिस्ट्री के बारे में पूछता है, इट इस्टैब्लिश अंडर द
Administration, Ministry of Health and Family Welfare, for laying down science-based standard for article of food to ensure safe food for human consumption. तो safe food human consumption जो भी हम लोग food consume कर रहे हैं that should be a safe, and that concern law is Food Safety and Standard Act 2006 के अकॉर्डिंग ये काम करता है. ठीक है, इससे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं. इट लेग डाउन मैकेनिज्म एंड गाइडलाइन फॉर एक्रेडिटेशन ऑफ सर्टिफिकेशन बॉडीज. जो भी फूड मार्केट से जो भी चेन देखते हैं, होटल रेस्टोरेंट है, उन सबको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराता है. प्रोवाइड साइंटिफिक एडवाइस एंड टेक्निकल सपोर्ट इन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट whenever they required advice from the government about the food materials, तो उसके लिए एडवाइस भी करते हैं. इट कलेक्ट डाटा रिगार्डिंग फूड कंजप्शन, okay, and contribute to the development of international technical standard for food, sanitary and phytosanitary standard. So this is very important for your exam point of view, because they can ask you question, what are the important points is true for the or correct about the Food Safety and Standard Authority of India. Now next important यहाँ पर जो न्यूज है वो है फर्स्ट एवर फंगल प्रायोरिटी पैथोजन लिस्ट. तो ये क्या है कि रिसेंटली WHO किसने लिस्ट रिलीज किया है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, released the first ever list of 19 fungal infection that can be threat to public health. So कितने fungal infection? Total of 19. Okay, these are categorized as priority pathogens. So pathogens क्या होते हैं? Fungal pathogens क्या होते हैं? They are major threat to public health, such as most fungal pathogens lack rapid, sensitive and affordable diagnosis. They are not able to diagnose properly कि what fungal infected you, and it's not able to give means immediate result. So that's one problem. That's why they are called a threat to the public health. So 4 classes of antifungal medicines like azoles, then echinocandins, okay, then paramyadines and polynins currently available. अभी 4 medicines available है. ठीक है, antifungal medicines अभी available, याद रहे. ऐसा पूछ सकता है कि there are no fungal medicines, antifungal medicines available worldwide, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर 4 classes of antifungal medicines already present है. Now incidence of and geographical range of fungal disease are expanding worldwide. अभी क्या है कि इंसिडेंस ज्यादा केसेस आ रहे हैं, जोग्राफिकली ज्यादा एरिया को कवर कर रहा है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग. सबसे इंपॉर्टेंट है कि ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड इंक्रीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेवल एंड ट्रेड. तो बिकॉज ऑफ 2 रीजन व्हाई दिस फंगल इन्फेक्शन इंक्रीजेस वर्ल्ड वाइड. Incidence is more reported in most part of the world because of 2 reasons. One is your climate change due to global warming, and second one is because of globalization. You can say about international travel and trade, or we can say because of the global warming and globalization are the 2 important reasons behind for increasing the case of fungal infection. So fungi that causes common infection become increasing resistant to treatment. So they are increasing means they are not able to means affect because of you have medicines to become a more resistant to treatment. Okay, so these news are again a very important for your exam point of view. Okay, so what you will do? Okay, so now we'll move to the next question here. Next our current affair topic here, self amplifying messenger RNA. ओके, वैक्सीन, सेल्फ एम्पलीफाइंग मैसेंजर आरएनए वैक्सीन, ये रिसेंटली न्यूज में रहा है. तो ऑब्वियसली दिस ईयर प्रीलिम्स में काफी सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं इससे. सो अ सेल्फ एम्पलीफाइंग मैसेंजर आरएनए वैक्सीन कॉल्ड ARCT 154. ओके, सो दिस इज कॉल्ड ARCT 154 डेवलप्ड बाय Arcturus Therapeutics Holdings, that is US based company, showed promise result against the COVID-19. So RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड डीएनए, आरएनए एंड डीएनए, ओके, दोनों में डिफरेंस होता है. आरएनए क्या डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, डबल स्टैंड होता है, ये सिंगल स्टैंड होता है. ठीक है, यहाँ पर बेसिकली थायमिन की जगह पे यहाँ पर थायमिन होता है, यहाँ पर यूरेसिल्स का यूज किया जाता है. ठीक है, यूरेसिल्स यूज होता है. दैट्स अ मेजर डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए. ठीक है, सो राइबोन्यूक्लिक एसिड हेल्प इन योर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बहुत हेल्पफुल होता है हमारे बॉडी में. ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस और अदर केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं दैट आल्सो हैपन बिकॉज ऑफ आरएनए. तो रिसेंटली दिस सेल्फ एम्पलीफाइंग मैसेंजर आरएनए वैक्सीन कॉल्ड ARC-154 डेवलप्ड बाय Arcturus Therapeutic Holding, US based company, those that shows a promising result against the COVID-19 coronavirus. Okay, so unlike conventional vaccine that inject a weakened form of virus or bacteria into your body, RNA vaccine use a part of virus own genes to stimulate an immune response. तो ये क्या करता है कि they use the virus का जीन यूज करता है, ठीक है, उसका and stimulate the immune response that make a body more immune stronger.
A conventional mRNA vaccine such as those from Pfizer's and Moderna use mRNA that encode the spike protein of the coronavirus. तो ये आज के टाइम में यूज कौन कर रहा है? Pfizer's ओके Moderna ये जो mRNA vaccines को यूज करें, that is spike protein that you encode the spike protein of the coronavirus. So this vaccine teach cells how to make copies of the spike protein that triggers an immune response inside human body when actual infection take place. So this is a, that's why it is called self amplifying messenger, because this will be teach a cells to make a copies against the infection that caused by the virus. Okay, usse fight karne ke liye it will be develop a spike protein. Okay, that is immune response will become more stronger against the infection that caused by the coronavirus. So this self amplifying mRNA vaccine is the improvement over the traditional mRNA, as it encodes 4 extra protein in addition to the vaccine antigen, and this enable amplification of original strand of RNA once inside the cell. तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि some extra 4 protein materials were added that apart from antigens. Okay, this enable the amplification of original strand of RNA once inside the cell. इसका मतलब ये है कि ये बार बार वैक्सीन आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. It will be amplifying, it will be self amplifying messenger that will fight against such type of viruses. So एडवांटेज क्या है कि ओवर कन्वेंशनल mRNA इज मेकिंग स्टोरेज, एक तो स्टोरेज इजी है, इट विल बी स्टोरेज इजी, मिनिमाइज डोज ऑफ आरएनए. ओके, डोजेस बहुत ही कम है कंपेयर टू जो ट्रेडिशनल mRNA वैक्सीन थी उसके कंपैरिजन में इसमें डोजेस बहुत कम है, एंड लोअरिंग द कॉस्ट ऑफ वैक्सीन, और वैक्सीन की कॉस्ट भी प्राइस कम कर रही है. तो सेल्फ एम्प्लीफाइंग मैसेंजर आरएनए वैक्सीन विल बी बेस्ट टू फाइट अगेंस्ट द कोरोना वायरस. ओके, सो आज के टाइम पे सबसे बड़ा क्या है कि बार बार आपको वैक्सीन लेना पड़ा था 2 डोज, यहाँ पर 1 डोज में काम चल जाएगा, एंड दैट विल बी अ लेस मींस वी कैन से प्राइस. RNA vaccine का क्या है कि safe and non-infectious, as not made of the pathogen particles in activated pathogen. It can generate a stronger type of immunity and can be produced more rapidly. So these are the 3 advantage of RNA vaccine. So this for very important for this year prelims exam. They can ask you mRNA vaccine क्या है. Then हम लोग बात करेंगे antimicrobial resistance. Okay, what is antimicrobial resistance? So antimicrobial resistance means when your body is when any type of medicines like antimicrobial medicines you are taking that not helps to fight against the such infection. So WHO recently released one report called a glass report. तो रिमेंबर ग्लास रिपोर्ट किसने रिलीज किया है? WHO ने. इसका होता है ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड यूज ऑफ यूज सर्विलेंस सिस्टम. सो ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड यूज सर्विलेंस सिस्टम, ये क्या? इट इज द एबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, viruses and some parasites to stop an antimicrobial such as antibiotic, antivirals or antimalarials from working against it. तो इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी में है लाइक बैक्टीरिया, वायरस, सम पैरासाइट, वो आपको मतलब कि जितने भी आप एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन लोगे जैसे एंटीबायोटिक, एंटी वायरल्स, ये सारे जितने भी खाओगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. दे विल रिमेन स्ट्रांग एंड दे विल इन्फेक्ट कंटिन्यूअसली इन्फेक्ट योर बॉडी. ओके, so WHO declared that this type of means antimicrobial resistance one of the top 10 global public health threat facing humanity. आज के समय सबसे ज्यादा टॉप 10 ग्लोबल पब्लिक हेल्थ का जो सबसे बड़ा थ्रेट्स है उसमें ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी एक नंबर पे आता है. ठीक है, इट हैज बीन फाउंड इन ऑल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. ऐसा नहीं कि कोई वर्ल्ड स्पेसिफिक है या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में या एशिया में या यूरोपियन में, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड दिस टाइप ऑफ प्रोग्रेस मींस फाउंड एवरीवेयर. ओके, सो इसका इंपैक्ट क्या है कि इट इनएबिलिटी टू ट्रीट कॉमन इन्फेक्शन. आप कॉमन इन्फेक्शन भी कोल्ड कफ वगैरह भी हो जाए तो भी आप मतलब जो भी सिट्रिजिन या जो भी मेडिसिन खाते हैं अगेंस्ट द कोल्ड कफ वो भी काम नहीं करेगा. इंक्रीज थ्रेट ऑफ मेडिकल प्रोसीजर सच एज ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी बहुत ही एक्सट्रीम केस भी हो सकता है लाइक ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन. एडवर्स इंपैक्ट ऑन एनिमल हेल्थ आल्सो बिकॉज ऑफ दे आर उनको बार बार वैक्सीन दिया जाता है फॉर इंक्रीजिंग मींस मिल्क प्रोडक्शन ऑल दिस, एंड इंडेंजर दी sustainable development goals etc. मतलब do whatever we are planning to end diseases, some TB tuberculosis disease को end करना है या अदर, तो वो सारे चीज को अचीव करने में हमें प्रॉब्लम करेगा. that will not able to achieve on time. okay, ना इंडिया में क्या इसके लिए कोई एक्शन लिया गया इंडिया में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए? तो इंडिया में कुछ प्रोग्राम स्टार्ट हुए हैं लाइक नेशनल प्रोग्राम ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस containment that was started between 2012 to 2017. okay, then a national action plan on antimicrobial resistance. okay, then red line campaign to discourage the over the
द काउंटर सेल ऑफ एंटीबायोटिक्स। रेड लाइन कैंपेन मतलब कि इसको ज्यादा सेल नहीं करना है मार्केट में, ठीक है। तो ओनली प्रिस्क्रिप्शन बाय द डॉक्टर, तभी जाके आप एंटी माइक्रोबियल आप जो मेडिसिन से वो ले सकते हैं। देन रिसेंटली अफसाई ने भी गाइडलाइन किया है लिमिटिंग एंटीबायोटिक इन द फूड प्रोडक्ट्स। तो फूड प्रोडक्ट्स में एंटीबायोटिक्स को कम करना है। एंड सेपरेट शेड्यूल H1, वेरी इंपॉर्टेंट, शेड्यूल H1 incorporate drug and cosmetic rules to regulate the sale of antimicrobial। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। शेड्यूल H1 रिसेंटली जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स ने रेगुलेट किया है, दिस इज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, सो इट इज फॉर द एंटी माइक्रोबियल रेगुलेट टू रेगुलेट द सेल ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स। ये इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्रीलिम्स में यहां से क्वेश्चन आ सकता है, ग्लास रिपोर्ट किसने रिलीज किया, ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस किया, उसके लिए इंडिया ने क्या किया अभी तक स्ट्रेटजी और स्टेप लिए हैं, ठीक है। सो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अगेन वन इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। Now we move to the next called gonorrhea. Okay, gonorrhea is one infectious disease, sexually transmitted infection disease है, जो रिसेंटली कीनिया में इसको डिस्कवर किया गया, आउटब्रेक हुआ है, ठीक है। A strand of antimicrobial resistance gonorrhea outbreak has hit the Kenya. So what is this gonorrhea? क्या? It is a sexually transmitted infection caused by the bacterium. Okay, Neisseria gonorrhea. Okay, so this name is like Neisseria gonorrhea. It can affect people any age or gender, ठीक है, any age or gender, but it's a particularly common trusted source among the teens and young adult between the age of 15 and 24 years। 15-24 years के बाद ज्यादा लोग को होता है। It often affect the urethra, rectum or throat. It women it can also affect the cervix। Okay, तो women को affect करता है ये। If left untreated, it can cause serious health problem including infertility and increase the risk of ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी HIV इन्फेक्शन का भी चांसेस बढ़ सकता है। तो डब्ल्यू के अकॉर्डिंग क्या, इट इज द सेकंड मोस्ट कॉमन डिजीज बाय सेक्सुअली ट्रांसमिटेड अक्रॉस द वर्ल्ड आफ्टर दिस इज कॉल्ड अ क्लैमिडिया। ओके, क्लैमिडिया इज द वन इन्फेक्शियस डिजीज है, सेक्सुअल इन्फेक्शियस डिजीज है, उससे ज्यादा उसके सेकंड नंबर पे आता है। इट इज यूजुअली ट्रीटेड विद द एंटीबायोटिक, बट द बैक्टीरिया हैव बिकम इंक्रीजिंगली रेजिस्टेंट टू मेनी ऑफ द ड्रग that were once effective। Okay, so this is important for your prelims point of view to remember what type of this disease। Okay, then zombie virus was in news. What is zombie virus? So zombie virus is a virus that emerged due to the thawing of permafrost as the global temperature is rising। तो मीन्स मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स, मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो वायरस का जन्म हो रहा है वो है जोम्बी वायरस। तो रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट। सो रिसर्चर एग्जामिन एंशिएंट वायरसेस सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम परमाफ्रॉस्ट इन द साइबेरिया रीजन ऑफ रशिया, ठीक है। सो दिस ओल्डेस्ट वायरस इज 48,500 ईयर ओल्ड called Pandora virus, Yodoma. Okay, Pandora virus, Yodoma. So this Pandora virus was discovered below the bottom of lake in which lake? Eucalus Alas in Yakutia, Russia. Okay, Sukechi Alas in Yakutia, Russia में इसको discover किया गया है। It has potential to be infectious and hence pose health danger after researching in live cultures। Okay, so health danger हो सकता है आने वाले समय में जोम्बी वायरस। तो आपके प्रीलिम्स में आपके इंपॉर्टेंट क्या है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ द मींस आउटब्रेक और इमर्ज ऑफ दिस जोम्बी वायरस इज दिस इज बिकॉज ऑफ द thawing ऑफ और वी कैन से मेल्टिंग ऑफ द permafrost as global temperature is rising। Okay, so this is the reason for the spread of this zombie virus, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम में याद रखना है। Then a pain plus strategy क्या? What is the pain plus strategy? Recently, Africa has adopted a pain plus strategy to tackle severe non-communicable disease। Okay, so pain plus strategy अफ्रीका ने लिया है, that is for type 1 diabetes, rheumatic heart disease and sickle cell disease। Okay, so these are called a non-communicable disease। So pain plus strategies to tackle severe non-communicable disease, one diabetes, okay, rheumatic heart disease and sickle cell disease। So package of essential non-communicable disease intervention was adopted by WHO in 2010 to support the decentralization of services to the primary care level। So pain plus refer to the approach to address severe non-communicable disease through an integrated outpatient service at the first level hospital। Okay, at the first level hospital। So remember pain plus strategy for prelims में, you know, they will ask you question whether you are aware about this word or not। So that much is important. That is for a tackle severe a non-communicable disease। Okay, so type 1 diabetes, rheumatic heart disease and sickle cell, these are called a non-communicable disease। Okay, so that is adopted by the Africa against this। Okay, now this is again we'll talk about one more important news here called what is called INCOVAC। Okay, what is called INCOVAC? बहुत important exam prelims point of view से। So recently Bharat Biotech's INCOVAC
the world first intranasal vaccine. This is intranasal vaccine. Okay, this is intranasal vaccine for COVID-19 received approval for emergency use in India. So Incovac is the first world का पहला intranasal vaccine है against the COVID-19. It is a recombinant replication deficient adenovirus vector vaccine with a prefusion stabilized spike protein. So it is a recombinant replication, deficient adenovirus vector vaccine with a prefusion stabilized spike protein. इसका benefit क्या होगा? It produces antibodies. It produces antibodies as well as reduce risk of transmission, while other vaccine only produce antibodies. So it also reduce the risk of transmission. जो vaccine is, because some vaccine is basically a virus that are cause more people affected because of transmission. So that will be stop here. This is very very important for your plans point of view. That's why first intranasal vaccine that will produce antibodies also as well as reduce the risk of transmission. So additional immune response है ये, addition of immunity in blood देगा, ठीक है. It activates immunity of cells found in tissues lining nose, mouth and lungs. So that part of the body which are more affected because of COVID-19, उसको ये hit करेगा, उसको ये target करेगा. It is very easy deliver, cut down syringe and needle etc. and just deliver करने में बहुत आसानी है and high compliance, at least suit for children and adults. तो चिल्ड्रन और एडल्ट्स के लिए काफी अच्छा वैक्सीन दिया जाता है कॉल्ड इनकोवैक. तो ये आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. दिस इज द फर्स्ट इंट्रानजल वैक्सीन एंड दैट वाज प्रिपेयर्ड बाय भारत बायोटेक. और इसका दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना है कि दिस विल बी एंटीबॉडीज को भी तो प्रोड्यूस करेगा और साथ में इट विल रिड्यूस द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन. सो दिस थ्री पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप दिस वीडियो हेल्प यू टू prepare for this year prelims exam. If you like this video, please like and subscribe. Okay, we will meet you in the next video where we'll discuss more important news from the science and technology. Okay, thank you everyone.